From Kashmir to Kanyakumari, India is a spellbinding mosaic of culture, tradition, languages and an extraordinary mingling civilization. Keeping its age-old culture maintained, today the country is taking huge strides in the path of development. Hello, I'm your host Karim Zimik, and today in our episode of My India, we bring you some of the stories that will give a glimpse of our country's diversity. India is a land of varied cultures and festivals. Be it Diwali, Eid or Christmas, every festival is celebrated with great zeal and enthusiasm. The similar scenes were witnessed during the 355th anniversary of Guru Gobind Singh that was celebrated with great fervour across the country. Sikhs across India thronged Gurudwaras, the holy Sikh shrines, to offer prayers on the birth anniversary of the 10th Sikh Guru, Gobind Singh. Takht Shri Harmandir Sahib in Patna city, which is also the birthplace of the Guru, was reverberating with the religious renditions of bhajan, kirtan and katha on the occasion. Devotees participated in religious programs and paid obeisance to the holy Guru Granth Sahib. Owing to rising number of COVID cases, the rituals were kept simple and limited number of devotees were allowed inside the Gurudwara premises. वही सेलिब्रेट तो अच्छा कर रहे हैं फिलहाल, जैसे कोरोना काल में थोड़ा वो होने के कारण थोड़ा सा धीमा है अब की बार पूरब, वैसे धूमधाम से मनाया जा रहा है पर उतना बड़ा नहीं जितना हर साल मनाया जाता था. Much enthusiasm was witnessed at Golden Temple, the holiest Sikh shrine, where hundreds of devotees lit candles in the honor of Guru Gobind Singh. Later, colourful fireworks and a light show also took place to mark the occasion. Devotees prayed for the welfare of mankind and eradication of COVID-19. मैं गुरु साहब जी अगे यही अरदास करी सी ते यही अगे तक करदी रहूंगी कि सारे विश्व दे विच जो भी कोरोना ओमिक्रॉन दी बीमारी फैल रही है वो खत्म होवे ते सारा संसार अपनी खुशियां भरी जिंदगी व्यतीत करे. Born at Patna Sahib in Patna in the year 1666, Guru Gobind Singh was the son of the 9th Guru of Sikhism, Guru Tegh Bahadur. Among his notable contributions to Sikhism are founding the Sikh warrior community called Khalsa in 1699 and introducing the 5 Ks, namely Kangha, Kesh, Kachera, Kara and Kirpan, also regarded as the 5 articles of faith that Khalsa Sikhs wear all times. Moreover, he is the one who finalized and enshrined the Guru Granth Sahib as Sikhism's primary scripture and eternal Guru. Every year, his birth anniversary is celebrated with great enthusiasm across the country, but this time, owing to the pandemic, it was mostly observed in solitude. Only few visited the shrines following strict guidelines and offered their prayers. मेरी किस्मत है कि मैं यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आ पाया और मैंने ये अरदास यही करी है कि कश्मीर के अंदर एक पीस और प्रॉस्पेरिटी रहे, लोग खुशहाल रहें और हमारे जो जितने जवान हैं चिनार कोर के जहाँ जहाँ भी तत्पर हैं सजग और सही तरीके से अपनी ड्यूटी दें. Guru Gobind Singh died in 1708 at Nanded in Maharashtra and was the final human Sikh Guru. Before his death, he declared Guru Granth Sahib as Sikhism's holy scripture. India is well known around the world for its peaceful coexistence, diverse culture and a multicultural societal framework. Examples of this harmonious existence could very well be seen in every nook and corners of the country. One such example is that of a canteen in Aligarh, where a Muslim and a Hindu worker work harmoniously and inspire others to live together with peace and harmony. India has always been a land of peaceful coexistence and a multicultural societal framework. Be it any state, city or territory, people of different religions have been residing harmoniously. Aligarh is one such city in Uttar Pradesh that is often seen as an epitome of religious unity due to the harmony that exists in its multi-faith society.
One such example is that of a small canteen in the city, where both Hindus and Muslims work together. ये हमारे मुल्ला जी हैं और एक पंडित जी हैं, छोले भटूरे पकौड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतनी मोहब्बत से और इतने प्यार से खिलाते हैं कि जिसका कोई वो नहीं, दुकानदार इस तरीके से कोई भी नहीं बोलता है और इतनी मोहब्बत मैंने इस दुकान पर देखी। इसी वजह से मैं यहाँ खाने आता हूँ कि यहाँ प्यार मिलता है, खाने की चीज़ तो मिलती है उससे ज़्यादा प्यार मिलता है और इतनी मोहब्बत है। दोनों भाई यहाँ देखा मैंने, एक दाढ़ी वाले मुल्ला जी हैं, एक हमारे पंडित जी हैं, दोनों इतनी मोहब्बत से काम करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसा देखने को या तो हमारे हिंदुस्तान में मिलता है और कहीं नहीं मिलता इतनी मोहब्बत। Situated near a traffic signal in the Tasveer Mahal area, the canteen is run by Press Club in Aligarh. Saifuddin and Ramesh Chandra Sharma are employees at the canteen, who collectively make snacks and tea for the customers. The bond of love and brotherhood between them is clearly visible and appreciated by all. एक पंडित जी है हमारे जो छोला भटूरा के कारीगर है, एक मैं हूँ, दोनों एकदम भाई की तरह काम करता है। ऐसा फर्क नहीं लगता है कि हम लोग कौन काम करने वाला है या कौन मालिक है या कौन क्या है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, ये है एकदम बिल्कुल प्यार मोहब्बत से। मेरा तो एकदम दिल से होता है मोहब्बत से, एक इंसान है हम दोनों एकदम भाई की तरह। कोई आज तक न कोई तफरका न कोई तरह की बात नहीं। ग्राहक को भी इसी तरीके से डील करता हूँ जैसे कि मैं आपस में मिल के रहता हूँ। It is due to people like Saifuddin and Ramesh who rise above religious lines and inspire people to live with peace and harmony. Now a roundup of some of the major stories that made news recently. Tourists in India's northern Shimla were elated to witness a fresh spell of snow as the hill town turned into a winter wonderland. Visitors, some of whom witnessed snow for the first time, said snowfall made their winter sojourn exquisite. लाइव स्नोफॉल में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कॉटन कैंडीज हमारे ऊपर गिर रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। वी आर एंजॉइंग अ लॉट। और हम लोग आज जाने वाले थे और आज हम रुक गए वापस स्नोफॉल देख के। अब हम लोग कल प्लान करेंगे जाने का। Hilly towns in northern part of the country are famous for their snow-clad mountains, scenic views and serene weathers and are thronged by tourists for adventure sports. Devotees of Hindu's god Ayyappa walk barefoot on bed of burning embers in India's southern Shivamogga city as they perform a fire ritual to appease the deity. Devotees chanted prayers, dipped their hand in hot oil and walked on fire as people gathered to see them on the occasion. Firewalking is an ancient ritual which originated in India and is often still practiced to show people's devotion and faith in a deity. The Queen's Baton Relay was held in New Delhi ahead of the Commonwealth Games. British High Commissioner to India Alex Sallis handed over the baton to Indian wrestler Ravi Kumar Daya, who kicked off the relay with a run. Well, I'm delighted to be here in Delhi to mark the start of the baton relay for the Commonwealth Games later this year in Birmingham. The relationship between the UK and India, as you know, is a huge one. Sport is absolutely fundamental to it. We're in the 75th anniversary of independence this year, and I think sport is one of the things which most brings our two countries together. The baton will be returned to the Queen at the opening ceremony of Birmingham Commonwealth Games in July. And now we will take you to Ayodhya city of Uttar Pradesh, where the Dargah of Hazrat Sayyad Ibrahim Shah Baba is serving as a symbol of religious harmony for years. Take a look. An epicenter of faiths, a place where brotherhood and bonhomie between as many religions could be seen flourished and prospered at its best. The Dargah of Hazrat Sayyad Ibrahim Shah Baba, situated in Ayodhya city of Uttar Pradesh, is one such melange of diversities. Located in the busy street of Adgada Swargdar, the shrine witnesses a rush of devotees throughout the day. Whether one is Hindu, Muslim, Sikh or from any other community, the aroma of the shrine serenades them into cheerfulness and a belief of fulfillment ensues in them. बारगाह और ये दरगाह
बड़ी ही मशहूर व मारूफ है। और ख़ास तौर पे जब गंगा जमुनी तहज़ीब की मिसाल दी जाती है तो इस दरगाह का नाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। हर धर्मों के मानने वाले यहाँ पे ख़ास तौर पे जुमेरात के दिन, बृहस्पति के दिन यहाँ पे हाज़िरी देते हैं, अपनी मन्नतें, अपनी मुरादें यहाँ पे पेश करते हैं और मालिक की कृपा होती है, सरकार की नज़र करम होती है, सरकार की दुआ होती है, सबकी तमाम परेशानियाँ, सबकी तमाम दुख यहाँ से दूर होते हैं। Community kitchen or langar is also set up at the outdoors to serve meals as holy sacrament to the devotees coming from different regions. Forming an integral part of the public ethos for the last several centuries, even today, these Sufi traditions play an important role in the lives of the people and connote them with an understanding of the world in its all spiritual dimensions. हमारे यहाँ 18 साल हर जुमेरात और यहाँ अपना भी कार्ड किया। हिंदू धर्म हर आदमी आता है और बाबा के चौखट तक आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी की सुनवाई ना हुई हो, सबकी सुनवाई होती है, सबकी मुरादें पूरी होती है। जो भी आता है, जिसके औलाद नहीं होता औलाद हो जाता है, जिसका शादी ब्याह का मामला होता है शादी ब्याह भी हो जाता है, जिसकी कोई परेशानी, जो भी परेशानी होती है बाबा के चौखट तक परेशानी सबकी दूर होती है, किसी भी कार्ड का मानने वाले। The message of brotherhood and bonhomie comes out loud from these dargahs and proves the lessons of humanity and compassion towards all religion communities is still having its roots deeply embedded in the culture and traditions of India. Moving on, it is said that youth of a nation is a major driving force towards its development and prosperity. With proper training and guidance, the young workforce can turn out to be the most valuable resource for the country. Moving on the same lines, Jammu and Kashmir administration is imparting training to youngsters in various skill development courses under RSETI, an initiative of Ministry of Rural Development. Skill development is a vital tool to empower people, to safeguard their future and for the overall development of an individual. Moreover, being an important aspect that enhances employability in today's globalization, providing training to youngsters in skill development courses can really do wonders for the nation's progress. In Jammu and Kashmir, several rural self-employment training institutes or RSETIs have been established across the territory to train youngsters in their respective courses. One among them is in Kulgam, where scores of girls are getting trained in various trades like cutting, tailoring, fashion designing, makeup and many more. Operational since 2011, the institute imparts training to around 300 girls every year. The director of RSETI Kulgam says that our motive is not just help the candidates seek employment but generate employment as well. मेन पर्पस यहाँ यही है गवर्नमेंट की इंडिया की तरफ से कि ये हमारे गाँव की बच्चियाँ जो है, ये बच्चे हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, वो किसी के सहारे ना जिए बल्कि वो सहारा अपने लिए खुद तलाश करे। उसके लिए उन्होंने ये इदारा कायम किया है जिसका नाम है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यही तो हमारा मकसद है कि उनको हम सिखाते हैं कि आप बेटा एंटरप्रेन्योर बने। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली द स्कोप but also they should generate the employment. Recently, a valedictory function was held at the institute wherein certificates were distributed among the candidates who have successfully completed their training. This certificate issued by an RSETI will help them avail credit linkage assistance by the banks to start their own entrepreneurial ventures. The trainees appreciated the institute's endeavors to keep them abreast of latest processes and technologies and help them become self-reliant.
मैंने 2020 से यहाँ पे ट्रेनिंग ली है, तो उसके साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पे हमें स्किल्स भी दिए जाते हैं और हमें यहाँ पे सिखाया भी जाता है, नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती है कि कैसे हम मार्केट में अपना बिजनेस स्टैंड करें। तो यहाँ से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। जेके RSETI ने जो भी मतलब यहाँ से मतलब हमें ये किया है प्रोवाइड, ये इनिशिएटिव जो प्रोवाइड किया है, इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो रही है। जैसे कि हम फैमिली पर डिपेंडेंट होते हैं अपने पैसों के लिए, अपने डेली नीड्स के लिए, तो उस हिसाब से हम वहाँ से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ से अभी हमें एक सूरत यहाँ से एक रिसोर्स भी मिलता है यहाँ से कि हमें लोन मिल सकता है, हम यहाँ से लोन निकाल सकते हैं, तो ताकि हम अपना इनिशिएटिव यहाँ से मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। Managed by banks with an active cooperation from the Government of India and state governments, RSETIs are established under an initiative of Ministry of Rural Development. One RSETI is in every district of the country and offers free and intensive short-term courses to ensure necessary skill training and skill upgradation of the youth. Once the youngsters get trained here, they will be free to access any scheduled bank for a loan or credit. यहाँ तो सब कुछ फ्री में। जब मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ भी फॉर्म के लिए जो भी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ थी फॉर्म के रिलेटेड कुछ भी हमें पैसे वैसे कुछ भी नहीं, और साथ ही यहाँ पे ये जो फूड हमें फ्री में मिलता है। और जो ये मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, मेरी एक फ्रेंड है वो यहाँ पे थी, तो उसी ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा वहाँ पे जो ट्रेनर है हमारी निगहत में बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो फिर मैं यहाँ आई हूँ इस ट्रेनिंग के लिए। जो यहाँ हमारे टीचर है डायरेक्टर साहब, उन्होंने बोला है कि अगर आपको कुछ लोन्स भी चाहिए, अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं अपना बिजनेस, अपने मतलब कदमों पे स्टैंड होना चाहते हो, तो आपको मिलेगा लोन यहाँ पे जितना आप चाहो। मतलब Skill development is considered one of the critical aspects for job creation in India. Such initiatives will go a long way in giving a push to entrepreneurial culture in the country. At last, we bring you a few short stories about the recent developments and happenings from around the world in our section of World in Focus. When the Tokyo Electric Power Company was decommissioned, a total of 5 options for disposal of the stored ALP's treated water were studied by a special independent subcommittee of experts. Finally, it was concluded that discharge into the sea could be implemented more reliably. How was this concluded? Professor Hiroshi Tauchi looks back on the careful examinations. その5つっていうのが、一つは海洋放出、それからもう一つが水蒸気として放出する、であるいは水素として放出する、それから地層注入、あるいは地層埋設という5つの選択肢を提案をして終わったところでございます。小委員会の場では、特にですね、社会的、経済的な問題を中心にしつつ、この5つの選択肢について、どの選択肢が最も現実的かという議論を行ってきました。実際に実行するまでの時間、あるいは経済的な投資額、あるいは実現の可能性ですね、そういうものを考慮すると、残るのは海洋放出、あるいは水蒸気放出ということになったという経緯があります。こちらについてはですね、リスクの評価を行っております。環境中に放出された時のシミュレーションですけども、広がりや、あるいはそこから想定される人への健康リスクですね。で、それの評価を行った結果として、海洋放出の方が明らかにリスクは低いということがありまして、海洋放出の方が妥当であろうという結論を出した。海洋は一定の流れ、あるいは拡散等が起こっていきますから、そちらの方がリスクが低いだろうというのが、小委員会の結論ということになり、海洋放出を第一選択肢として回答したという経緯があるということです。日本の場合はですね、それぞれの原子力発電所等で、目標値というのを定めてます。これは総量と濃度の両方で規制をかけているということです。で、国際基準は実は濃度しか規制はかけておりませんので、そういう意味ではもともと日本は厳しめの対応をしてきたというふうに私は理解をしております。
To confirm the path towards the decommissioning, it is necessary to obtain understanding from related local governments and residents. Mutual understanding with the parties concerned, including those from other countries, is integral. Continuous efforts by TEPCO, Fukushima citizens, the Japanese government, and relevant personnel worldwide are required. Colorful floats, music, and dance embellish the streets of Pasto in southern Colombia for the annual Black and White Carnival. The festival, considered intangible heritage by UNESCO, stems from the South American country's indigenous, Spanish, and African traditions. Esto es una conmemoración que le hacemos a lo que estamos pasando hoy en este mundo, el virus. Ese es un animalito que nos produjo el virus, el COVID. Y tenemos las calaveras, los aficionados que se murieron, los que vuelven a renacer, los niños, los viejitos y la dama. Ese es todo el motivo, se llama renacer. Despite its name, which evokes the ritual of wearing black and white clothing to symbolize unity and equality, the carnival combines vibrant colors and music to celebrate ethnic and cultural diversity. One of its traditions involves carnival goers teasing each other by throwing talcum powder and foam. However, in an effort to thwart the spread of COVID-19, authorities ask carnival visitors to show proof of vaccination, wear masks, and avoid close contact with other participants. Water from Fukushima Daiichi nuclear power station will be discharged into the sea after being treated on the advanced liquid processing system to remove harmful materials from it. However, tritium, one of the nuclear materials, cannot be separated from the water. Kaiichi Nakakawa, professor of the University of Tokyo, explains how this will be harmless. トリチウム、水素の同位元素でありまして、ごくわずかな、ベータ線という透過性が非常に低い、放射線を、放出します。トリチウムっていうのは天然にももともと存在する物質で、したがって我々が普段から飲むお水とか、もっと言うならば我々の体の中にもトリチウムっていうのは存在するわけですね。原発の状況を見ると、アルプス処理をすることで、簡単に言うならばトリチウム以外の放射性物質は取り除ける。しかし、トリチウム水を取り除くというのは水の中から水を取り出すようなものなんですね。でこれは原理的にできない。そうするとこれを、何らかの方法で、放出しない限りはタンクの中にトリチウム水が、溜まり続けるということになるわけですね。海に流す。これによる影響というのは極めて少ないです。総合的に考えるならば、適切な形で、海洋放出をするというのがですね、最も合理的な選択ではないかな。The process of decommissioning is undertaken with utmost carefulness and mutual understanding of all stakeholders. Mexican children receive festive gifts from the three wise men who visited Mexico City. With Santa now back at the North Pole, parents and children turn out every year for the traditional last hurrah of the festive season, posing for photos with people dressed as biblical legends who returned every year to give presents to their admirers. Hace ya algunos días están, dice que ya quieren que lleguen, así como uno cuando antes era niño, igual con esa ansiedad. Me siento como que emocionado también, porque verlos a ellos cuando lleguen los reyes, que su cara de felicidad, como sus expresiones, pues que se sientan felices al ver todas las sorpresas que van a llegar, ¿no? Catholic tradition claims that the three wise men followed a bright star to Bethlehem, bearing gifts for the baby Jesus. The
That's all we have for you this week. Your comments and suggestions are important to us. Do give us your feedback at myindia@nin.com. I'm your host Karim Zimik, and it's goodbye from the entire production team.